So in the last class, we were discussing about VPN, right? And I told you about IPsec. What are the IPsec protocols, right? We discussed about phases, IPsec phases. So in the last class, we were discussing about IPsec. And in IPsec, I told you about IKE protocols like IKE, means IPsec protocols like IKE, ESP, and AH. So I told you about this IKE, right? It has two versions. And we discussed about IKE V1. And we will also discuss about IKV2 in Flex VPN. Okay, in Flex VPN. Now let's discuss about ESP. Then we will move to site-to-site VPN. ESP is called Encapsulated Security Payload. Related Security Payload. ESP. Okay. So ESP is used to carry or is used to encapsulate encrypted traffic so that so that router can send it through the VPN tunnel over the इंटरनेट ओवर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओके इंटरनेट क्या होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओके so it will encapsulate the encrypted traffic now here we are going to configure site to site VPN so for that I will use a router for branch 1 and I will use a router for branch 2 or you can say any other remote site and we will provide internet connectivity to them and then we will configure site to site VPN okay after that when VPN tunnel is negotiated okay when VPN tunnel is negotiated successfully and when these internal endpoints will send the traffic to each other then their traffic will go through VPN tunnel because it will match with the VPN policy okay now when the traffic will go through VPN tunnel all the data will be encrypted let's say this PC is trying to ping so here it will be ICMP packet then IP header so this IP address this PC IP address is 10.1.1 and this PC is 10.1.2.1 so source IP will be 10.1.1 and destination IP 10.1.2.1, right? This packet will be sent to R1 and it will be matched with VPN policy and it will be encrypted. This packet will be encrypted. But this packet needs to be sent over the internet, over the public transport. So we need some other information, right? Because ये data तो encrypt हो जाएगा router पे, तो यहाँ पे एक header लग जाएगा कौन सा ESP header, encapsulated security payload ESP header, and after that this outer IP header. Like here, for example, we have a public IP 101.1.1, and here we have 102.1.1.1. Okay, so source tunnel source IP address will be there 101.1.1, and tunnel destination IP 102.1.1. This is how your packet will be sent after encrypting. After encrypting, okay, because all this information is encrypted okay and then ESP header is added and after that this is outer IP header it is called outer IP header this outer IP header contains tunnel source and tunnel destination these are the WAN IP address of VPN device okay so this is how ESP is going to encapsulate the packet okay it is a layer 3 protocol and its IP protocol number is 50 okay 50 it supports NAT
because the outer IP header is in plain text, right? Its IP addresses can be translated. Okay, so it supports NAT, but it does not support PAT, port address translation by default. Okay. After that, if you want to use PAT, then you can use NAT-T, NAT traversal. Okay, we use NAT-T feature. ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. NAT traversal, NAT-T feature to enable PAT support for ESP packets. Now, can anyone tell me why PAT is not supported for ESP? ESP के लिए PAT support क्यों नहीं करता by default? बताओ. Mr. Shibu, any idea? सौरभ जी बताओ. नो सर, इसका आइडिया नहीं है अभी। अब सर होगा. मुझे भी नहीं आइडिया है इसका। देखो ESP एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, इसमें आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज होता है और पैट को यूज करने के लिए आपको चाहिए पोर्ट नंबर. पैकेट में क्या होना चाहिए? पोर्ट नंबर, तभी तो पैट कर सकते हो, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट? बट ESP एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, तो इसमें पोर्ट नंबर तो होता नहीं है कि नहीं? तो आप ESP पैकेट्स को बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट नहीं कर सकते पैट के थ्रू. ओके, बट नेट कर सकते हो आप. नेट सोर्स आईपी के बेसिस पे होगा, वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो टू इनेबल पैट सपोर्ट इन ESP प्रोटोकॉल वी यूज नेट टी फीचर, नेट ट्रैवर्सल. इसमें क्या होता है कि आपके ESP पैकेट में, जैसे अगर ESP का पैकेट कोई क्रिएट होगा तो कैसे एनकैप्सुलेट होता है? फॉर एग्जांपल इट इज ए HTTP पैकेट. ओके, देन हियर TCP हेडर विल बी एडेड. यहाँ से पहले क्या होगा? डेटा होगा. ओके, now IP header will be added. This is the packet which will be generated from a PC. एक कंप्यूटर से यही पैकेट तो जनरेट होगा, और जब ये आपके राउटर पे आएगा, आपके VPN डिवाइस पे आएगा, तो ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, राइट? अब आपके राउटर के पास कोई फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन तो है नहीं पैकेट में, तो यहाँ पे क्या ऐड होता है? ESP हेडर which can carry this encrypted traffic over the public network. And after that, outer IP header will be added. In outer IP header, you will see the public IP addresses of your WAN routers like this. This is called outer IP header. Okay, यहाँ लिख देता हूँ header. Outer IP header. Okay. So here you cannot see any port number. यहाँ कोई port number तो है नहीं, तो फिर ESP के पैकेट्स को आप पैट के थ्रू ट्रांसलेट नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट. बट आफ्टर यूजिंग नेट ट्रैवर्सल, ए पोर्ट नंबर विल बी एडेड इन द पैकेट, UDP पोर्ट नंबर. ओके, यहाँ पे एक UDP हेडर लग जाएगा, UDP 4500 का, ठीक है? और फिर इसके बाद होगा आपका आउटर IP हेडर. ओके, इन विच पब्लिक IP एड्रेसेस, टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन इज डिफाइंड. ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे नेट ट्रैवर्सल कैसे वर्क करता है. बट फॉर नाउ, without NetT, it will be like this. Here you can say it is tunnel source and it is tunnel destination. Okay, these will be the public IP addresses of your VPN device. Okay, clear? आप ये लिख भी सकते हो, ESP supports NAT because this outer IP header goes in plain text, so its IP address can be translated, right? So it supports NAT, but it does not support PAT. Okay. After that, we have AH protocol. It is called authentication header. सर ESP ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता क्या? करता है. ESP provides all the 4 benefits of features. Confidentiality, where integrity, authentication, and anti-replay. All the 4 features. Okay, ESP can carry encrypted data. ये देखो ना, सबसे मेन पॉइंट, ये आपका encrypted data इतना है ना. अब अगर ये encrypt हो गया तो आपका राउटर इसको कैसे सेंड करेगा? कुछ तो चाहिए इसको इन्फॉर्मेशन राउटर को. तो यहाँ पे एक ESP हेडर लग गया, फिर उसके बाद टनल सोर्स, टनल एंड पॉइंट लग गया. ओके,
So ESP will be able to provide all the four features of IPsec, but AH does not provide. Okay, AH is used to carry or encapsulate, carry the traffic which is going through IPsec tunnel, which is going through IPsec tunnel. It does not support encryption. Okay, it provides integrity, authentication, and anti-replay features. Okay, but it does not support encryption. Okay, so it is not that much used. It does not support NAT and PAT. Because AH includes outer IP header to calculate the digest value. Okay, digest value. So if you are changing any IP address in the transit, अगर आप किसी भी नेट डिवाइस से या पैट डिवाइस से सोर्स आईपी को चेंज कर रहे हो, तो वो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होने के बराबर होगा, राइट? बिकॉज अगर आपके एएच प्रोटोकॉल है, लेट्स से, अब देखो एएच का एनकैप्सुलेशन कैसे होता है, एएच का भी सेम रहता है, बस एएच में ये डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होगा, ठीक है? दिस इज योर डेटा, then it's http header, for example, and after that TCP header will be added, then IP header, after that AH, and outer IP header. It will be like this. Okay. In outer IP header, tunnel source, tunnel destination will be there. And see here in ESP, this much of packet is protected, right? ये protected packet है, ये protected information है. But in AH, from the beginning, it is protected. Okay. Digest value will be calculated for the entire packet. समझ में आ रहा है? ये outer IP header भी यहाँ पे protected होता है. So if you are making any changes in the source IP address of this AH packet, then it will be considered that its information is altered or changed or modified in the transit. So ये integrity verification check में fail हो जाएगा और packet discard हो जाएगा, right? So we cannot use NAT and PAT when we are using AH. Okay. ठीक है, तो ये AH protocol, it is also, it works on layer 3 or it works at layer 3. And its IP protocol number is 51. Okay, 51. So AH is not widely used. Mostly you will find ESP is used. And in some of the vendors, you will find ESP is only supported. Okay, AH होती नहीं है वहाँ. ठीक है, तो ESP यूज होता है, आप ये लेके चलो. ठीक है, अभी हम लोग आगे ESP के पैकेट्स भी देखेंगे. ठीक है, अब देखो ये AH तो इनक्रिप्ट ही नहीं कर रही. सबसे पहले तो AH डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करती है, राइट? You cannot use encryption algorithm when you are using AH protocol for encapsulation. Okay, so and encryption is the most critical part for VPN. अब अगर आप encryption ही नहीं use करोगे तो फिर क्या benefit है उसका, right? So you will always find that ESP is being used because it supports encryption, authentication, confidentiality, सारी चीजें यहाँ पे support करता है. Okay.
तो दीज आर IPsec protocols which can be used. Okay, तो देखो VPN टनल को नेगोशिएट कौन करवा रहा है यहाँ पे? IKE, राइट? उसमें दो प्रोटोकॉल्स हैं, IKEv1, IKEv2, वो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट? आफ्टर दैट, व्हेन योर VPN टनल इज एस्टेब्लिश्ड, देन योर डेटा प्लेन इज बीइंग सिक्योर्ड. डेटा प्लेन जो आपके एक्चुअल यूजर्स का ट्रैफिक है वो सिक्योर हो रहा है, राइट? एंड देन टू transport, to forward that encrypted data, we are using these encapsulation protocol, ESP and AH. तो आप ESP यूज करते हो मोस्टली, ठीक है? क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू साइट VPN. अब साइट टू साइट VPN मैं बता देता हूँ क्या होता है, वैसे बता चुका हूँ पहले भी, है ना? फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. ओके, so site to site VPN is used to provide secure connectivity between two remote sites which are communicating over the public internet, over the, you can say, public transport. Okay, site to site VPN is used to create a secure virtual tunnel between two remote sites communicating over the public internet. आप देखोगे रियल टाइम नेटवर्क में कई बार हम लोग जो ब्रांच साइट्स होती हैं, रिमोट साइट्स होती हैं, उनको डेटा सेंटर से या किसी सेंट्रलाइज्ड साइट से कनेक्ट करने के लिए साइट टू साइट VPN का यूज करते हैं. ओके, कई बार जो कुछ रिमोट साइट्स होती हैं उनके बीच में अगर इंस्टेंट सिक्योर कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है और कोई कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं है पहले से, तो आप साइट टू साइट VPN वहां पे स्टेब्लिश कर सकते हो. ओके, between router and router you can configure site to site VPN. Between router and firewall you can configure site to site VPN. Between firewall and firewall you can configure site to site VPN. You can configure site to site VPN between your physical firewall and virtual cloud based network also. Okay, जैसे AWS में अगर आपका नेटवर्क चल रहा है और आप उनको अपने रिमोट साइट से कनेक्ट करना चाहते हो, राइट? रिमोट साइट्स तो फिजिकल लोकेटेड होती हैं मोस्टली. मान के चलो कोई अगर कोई भी सोशल मीडिया बेस्ड एप्लीकेशन है, राइट, दैट इज रनिंग ऑन ए क्लाउड बेस्ड, यू कैन से, सर्विस, देन to provide the connectivity to its management team, to provide the connectivity to its own offices, branches, to that remote cloud, we need to use VPN tunnels, right? हम लोग यूज करते हैं VPN tunnels का, तो वहां भी आप साइट टू साइट VPN इंप्लीमेंट कर सकते हो. ओके, clear? So site to site VPN is used to create a secure virtual tunnel between two remote sites communicating over the public network. Okay, it will provide secure communication between two different LANs, right, over the internet. So it is also called LAN to LAN VPN. LAN to LAN VPN. It is used to create a point-to-point static tunnel between VPN peers reachable over the or reachable via internet. है ना? वो रीचेबल होने चाहिए, ठीक है? अब जिनके बीच में आप VPN टनल स्टैब्लिश करना चाहते हो, वो दोनों VPN डिवाइसेस एक दूसरे से रीचेबल होनी चाहिए. ओके, इन दिस VPN वी यूज we configure, ऐसे लिख लो, we configure static IP addresses on WAN interface of the VPN peers. ओके, तो ये स्टैटिक टनल क्रिएट होती है, तो इसमें अगर IP चेंज होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट?
So we need to configure static IP address on WAN interface of the VPN peers. We use IPsec to negotiate the VPN tunnel and to secure the traffic in site to site VPN. ठीक है, site to site VPN में क्या यूज होता है? IPsec. We can configure IKEv1 or IKEv2 based site to site VPN. तो पहले हम लोग अभी IKEv1 के बेसिस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके, IKEv1 के अकॉर्डिंग. फिर हम लोग जब फ्लेक्स VPN पढ़ेंगे तो IKEv2 यूज करेंगे उस टाइम पे, ओके, क्लियर. सो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम क्लियरली कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अगर मैं अभी IKEv2 पढ़ा दूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है इजी, ठीक है. ये साइड टू साइड VPN होता है. अब जैसे आपके पास मान के चलो 2 ब्रांचेज है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 ब्रांचेज है. Here, here you have branch 1 or site 1. You are connecting a router or you can also connect a firewall. Okay, मैं अभी router आपको दिखा रहा हूँ. iOS based करेंगे पहले, ठीक है, फिर firewall connect करेंगे like Cisco ASA और Cisco FTD. Okay, this is R2. This is in branch 2, R2. Or you can say that R1 is your remote site and R2 is a centralized headquarter. Okay, it is a centralized headquarter or regional hub site where multiple sites are, you can say, being merged. Okay, ऐसे करके आप कोई एक centralized site consider कर सकते हो. And behind these devices, behind these VPN devices, we are connecting their internal network. Okay, so here we have some users. Behind R2, you can say you are connecting a server or here you are connecting a user. Now we are trying to establish VPN tunnel between these two devices. This is called site-to-site VPN or LAN-to-LAN VPN. This is a local area network where you are running a specific subnet, and this is another local area network where you are running a specific subnet. Okay, and their VPN devices are reachable via internet. So here also we are going to use an IP subnet. We can take 191.1.0 जैसे मैंने कल बताया था आपको. Yeah, right. My pen is not working at this place correctly. 192.1.1.0/24 and this is 192.1.2.0/24 or 191 है, ठीक है, कोई नहीं. So here you will configure an IP address and here you will configure an IP address. On ISP router, we will configure IP addresses like this, right? Now, what we want, when these LANs, these two LAN will communicate with each other, then they should be able to communicate via tunnel, right? So here we are going to establish a site-to-site VPN, okay? And this tunnel will be a point-to-point, a static tunnel, okay? Point-to-point. Here there is no other, right? तो ये पॉइंट टू पॉइंट टनल हो जाएगी, ठीक है. तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. तो देखो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइट टू साइट कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर साइट टू साइट VPN विद IKEv1. ओके, ये क्या हो जाएगा? विद IKEv1. ऐसे लिख लो IPsec IKEv1. Okay, on Cisco router. So you need to configure phase 1, you need to configure phase 2. Okay, first of all, you need to configure IP addresses according to your topology, according to your network on that VPN device, right? After that, you need to establish this WAN connectivity. These VPN peers must be able to reach each other via WAN, right? Via public internet. After that, you can configure VPN. Okay, so first of all, verify the WAN connectivity between VPN peers. VPN peers means जो आपके VPN devices है. Okay, here it can be router, it can be firewall, or it can be any cloud-based device. Okay, then configure
IKEv1 phase 1, right? Phase 1. Now in phase 1, what you need to configure? In phase 1, you need to configure IKEv1 और ISACAMP. अब देखो ISACAMP लिखना, ठीक है, क्योंकि राउटर पे करेंगे. ISACAMP policy. After that, define ऑथेंटिकेशन. देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप दो ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, दो टाइप की ऑथेंटिकेशन, राइट? कल मैंने बताया था. ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले आप प्रीसेड की यूज कर सकते हो. प्रीसेड की, इन प्रीसेड की व्हाट यू नीड टू डू, you need to select authentication type. In policy you need to select authentication type pre-shared key, and after that you need to define that pre-shared key on the router because it is pre-shared. आपको ये पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखनी है, राइट? Then you need to configure, if you need to configure certificate based authentication, that is another method. So you will define in ISACAMP policy, you will define authentication RSA signature. Okay. For digital certificates, we use authentication type RSA signature. Okay. And you need to download root certificate, identity certificate on your VPN device so that it can use them. So we will see that later. For now, I will configure pre-shared key based authentication and we will define pre-shared key on both of the routers and it must match, right? Then only your VPN peers will be successfully authenticated. After that, what you need to do after configuring authentication, you need to configure IKEv1 phase 2. Okay. Phase 2. Now, site-to-site VPN is using IPsec. So here you need to define IPsec policy. So what you need to define in phase 2? IPsec policies means the encryption and hashing algorithm which will be used to secure users traffic. Okay. Here you can write it like this: encryption hashing algorithms. Okay. In IKEv1 policy, I will tell you separately what are the attributes you are going to configure. Okay. यहाँ पे आ जाएगा. देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको encryption algorithm बतानी होती है. Then authentication method, pre-shared करने वाले हो या certificate based. After that, DH group. Then you need to define hash algorithm. Okay, hashing algorithm. You need to define these parameters in ISACAMP policy or in IKEv1 policy. Okay. And I told you that to successfully negotiate IKEv1 phase 1, we need to configure these parameters exactly same, right? Lifetime is, you can say, it is not mandatory to match, right? But these parameters are mandatory to match on both of the devices, on both of the VPN peers. Okay. So in phase 2, you will define IPsec policy. अब phase 2 में आप IPsec policy जो define करोगे, जिसमें आप encryption and hashing algorithm define करोगे. These encryption and hashing algorithms will be used to secure users traffic. जो भी आपके user का traffic है, उनको secure करने के लिए use होगा. Data plane को secure करने के लिए use होगा. Okay. Then configure interesting traffic ACL. See, for VPN, there is a funda which is very clear. You have to practice a lot. आपको practice करके बहुत VPN देखना पड़ेगा बार बार, ठीक है? आपको कॉन्फ़िगरेशन भी याद रहनी चाहिए एक तरीके से, तभी आप VPN अच्छे से सीख सकते हो. ओके. तो जितना आप VPN में प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा. बाकी बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ओके. इन द एंड क्रिएट क्रिप्टो मैप. अब देखो क्रिप्टो मैप का क्या यूज होता है यहाँ पे, ठीक है? अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अब देखो आपने यहाँ पे IKEv1 कॉन्फ़िगर कर दिया, IKEv2 कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर पे, सॉरी, IKEv1 phase 1 and IKEv1 phase 2 कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट? Now you need to apply all this configuration on the router somewhere so that it should be effective, right? ये कॉन्फ़िगर करने से सिर्फ इफेक्टिव नहीं हो जाता. So what we need to do, we need to create a crypto map and call VPN peer IP address. ओके. VPN peer IP एड्रेस जिसके साथ आप VPN एस्टेब्लिश कर रहे हैं. तो अगर आप R1 पे क्रिप्टो मैप बनाओगे तो उस पे R2 का WAN इंटरफेस IP एड्रेस डालोगे, राइट?
और अगर आप R2 पे क्रिप्टो मैप बनाओगे तो उस पे R1 का वैन इंटरफेस आईपी एड्रेस डालोगे। ओके, सो VPN peer IP address, interesting traffic ACL, and ट्रांसफॉर्म सेट। अब देखो ट्रांसफॉर्म सेट क्या होता है, ये आईपीसेक पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेट। जब आप कॉन्फ़िगर करोगे आईपीसेक पॉलिसी तो आपको एक ट्रांसफॉर्म सेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, दिस ट्रांसफॉर्म सेट इज कॉल्ड आईपीसेक पॉलिसी, so you need to call transform set, okay, so that we can apply this configuration or VPN configuration, right, to WAN interface or to the interface which is facing ISP, which is connected with ISP। तो ये वाला इंटरफेस हुआ ना, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये E0/0, तो आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, E0/0 पे। ओके, ताकि जब ये राउटर इस सॉरी जब ये ट्रैफिक इस राउटर से बाहर निकले तो वो VPN टनल के थ्रू जाए, राइट। So you will apply all this configuration on this outside interface, you can say, which is connecting with ISP, which is facing ISP. Okay, we can apply this configuration to WAN interface, which is facing the internet। Clearly लिख लो आप, है ना, which is facing the internet। अब एक WAN इंटरफेस होगा, हो सकता है वो MPLS से कनेक्ट हो, है ना, तो वहां तो नहीं चलाओगे आप। ठीक है, तो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस WAN इंटरफेस पे आप इसको अप्लाई कर दोगे। Okay, so here on R1, if it is E0/0, then it will be applied on E0/0. On R2, if it is E0/1, then it will be applied on E0/1. Okay, then IKV1 and नहीं और होता है either camp will be enabled. By default, it is disabled. Okay, on the VPN device. Okay, so this is how you are going to configure it. By default, IKV1 और either camp कुछ भी बोल लो आप, डिसेबल होते हैं। ठीक है, okay, so I am going to create this lab in my VMware. Any doubt till now, Mr. Hirak, Mr. Parvez? No.